time for the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. Meet and greet. Proceed to the meet and greet. Hello all, this is Gargi from Asavari's Meeting Show 28. And I'm going to introduce Azam Ibrar Beg, and he is Asavari's star speaker. So welcome in my show, and please, Azam, tell our audience a little bit about yourself. I know you are very talented, you are very creative, but our people wants to hear from you. Yes, hello, hi, how are you? Thank you so much for taking me on your show. Yes, my name is Azam Ibrar from New York. I'm a Pakistani American communist. Actually, I follow a little bit politics, and from my country, from here, America, we follow, Democratic Party. I'm a Democratic person, so I follow all the Democrats. And my education is, I did some college, then I got married earlier, and now I have my own construction business. And thank you so much for having me on this show. It's indeed my great pleasure. And you are so charismatic and you are so presentable, so that's why Asavari has chosen you as the star speaker. So we have quite a bit of our discussion. So let me start with the first one, which is the youth wing. I know that you are the leader of the youth wing. So let's talk a little bit about the youth wing. So let me just read a little bit so that our Nazreen, the audience would know that what we are talking about. And then, I will ask you a question, okay? Sure. The youth wing is often formed mostly by the students, junior employees, and young cadres of a political party. Youth means fresh and new ideas, diligence, vigilance, networking, and better technical support, social media expertise, charisma, appeal, and a competitive presentation. But often people find more trust in the seniors, and in most cases, an elderly person or a senior citizen is chosen as the president, prime minister, CEO, or a VVIP, very, very important person. Old is gold and more experienced is the concept. People like youth wings but consider them as less matured, inexperienced, aggressive, impatient, and intolerant. In my understanding, youth wing is अच्छा है और बिल्कुल बच्चा नहीं है. बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल बच्चा नहीं है. So मेरा सवाल आपसे, what do you explain to our audience about the youth wing, and how would you convince them about the capabilities of the young generation? And you can talk either in English or in Urdu or in Punjabi, jo aapka man kare. No, I'll start with English because you started with English. I think youth wing is now this time of the this time of the world. I think we are the smartest one. I'm not saying the educationally smartest one, but I think the technology, the most grooming technology was implemented on us, the youth, from the people who were born in 1986, from 86 to now. I think we are the one who are living in the technological world. And our ancestors or our elder people, I'm not putting them down, but they are the smartest one. We need them on our side. But I think the youth, they should bring their youth up front for making decisions, because our elders, they are not putting us up front for making the big decisions. But I think we can make decisions. Because we've seen the old world and we've seen the new world. We've seen the black and white, and now we've seen the color TVs too. So I think we
we the youth, we are sometimes they recognize us, but when we are up front, they put us down. Then they said we can make decisions. So I think they should let youth to make decisions now. एग्जैक्टली यू नो आई मीन इट्स देखिए सब कुछ अपने अपनी जगह में होता है दे हैव देयर ओन प्लेस अपना जगह है यू नो आई मीन वी ऑलवेज टेक एन एडवाइस यू नो दे कैन बी आवर एडवाइजर हाँ जी, बिकॉज उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखे हैं हमसे कई गुना ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखे हैं और आजमाए हैं वो तजुर्बा है हमसे कई गुना हाँ जी, लेकिन यू नो हमें भी एक जगह चाहिए जो हम में से यूथ जो है तो उनको आगे लाने के लिए जहाँ से जितना हो सके यू नो हम हमारी कम्युनिटी को और पूरी दुनिया को आगे लाना चाहिए क्योंकि इतना एनर्जी इतना भरपूर यू नो आई मीन लाइक उबल रहा है यू नो यंग ब्लड जिसको कहते हैं हाँ जी। तो इसीलिए यू नो आई मीन देखिए अगर सरहद को देखा जाए उधर जो जवान होते हैं वो तो यूथ ही होते जी, हैं आप कहीं भी देखें, आप आई थिंक यू गो टू हॉस्पिटल्स, यू गो टू योर इंस्टीट्यूट्स, लाइक ऑल द इंस्टीट्यूट्स, you go see, everybody is youth, like, your doctors are youth, young doctors. But when it's time to make decisions, then, they don't trust us. So I think they should trust you to make decisions. एग्जैक्टली ट्रस्ट रखे भरोसा रखे और हाँ यूथ जी, को एक चांस दे और देखे दैट यू नो हाउ दे आर डूइंग यू नो आई मीन अगर हमसे काम ठीक से नहीं बन पा रहे हैं तो देन कोई बात नहीं पर यू नो चांस तो दो भाई हाँ जी, हाँ चांस जी। चांस देना चाहिए. चांस देना Everybody चाहिए everybody talks about youth. So like the country I'm from, we always have good leaders, So we had leaders who talk about youth, but when time comes, they ignore them, you know. So I think they shouldn't ignore that. They use us, like you mentioned in the earlier, that youth comes from schools and the unions and stuff. So they use us to for their stuff, but when we are up front, they just ignore us. So I think सारा कुछ बच्चे ही करते हैं, लेकिन जब बच्चों का टाइम आता है तो फिर बच्चे इग्नोर किए जाते हैं. तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. So उनको आगे ही रखना चाहिए, आई थिंक. जो बिल्कुल आगे रखना चाहिए देखिए यू नो आई नो दैट आप बेनजीर भुट्टो साहिबा को बहुत इज्जत करते हो और सच में यू नो मैं भी the उनको whole the बहुत whole world, the whole respect Benazir Bhutto. She had a name, she did everything for the. विमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है जब भी इस बात आ जाता है यू नो बेनजीर भुट्टो साहिबा और उनके अब्बूजान जुल्फिकर अली भुट्टो साहब को हम बहुत इज्जत करते हैं और भुट्टो आज भी जिंदा है और अगर पूछा जाए कैसे और कहाँ मैं तो बोलूँगी हमारे दिल में हमारे दिमाग में हमारे काम में और इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन यू नो इट्स लाइक एन अवेयरनेस आई वुड से Any good person, he's always remembered. It's not like, एग्जैक्टली some ऑलवेज people, रिमेम्बर्ड and some people disrespect them, like ये they कहते हैं जी भुट्टो जिंदा है. So like you're saying, वो हमारे दिलों में जिंदा है, उनका काम जिंदा है. So that's how you remember people, like, So एग्जैक्टली if I'm gonna if I'm gonna ऑलवेज if I मेमोरेबल हाँ जी, if I'm gonna do something good, obviously people will remember me. So उस टाइप में जिंदा है. नहीं मैं एक्चुअली बेनजीर साहिबा को एक और जो पॉइंट है शी वॉज वेरी मच प्रो यूथ यू नो अभी हम यूथ जी, के बारे में बात कर रहे हैं हाँ और जी. उनका जो बेटा बिलावल भुट्टो ही इज यू नो He's यंग he's an example, he's a member of parliament right now, and he's youth. Like हमारे जो current prime minister है Imran Khan साहब, he had a vision for youth too when he started, like, when he was campaigning for his election, these recent election 2017-18. He was really into the youth, like he wanted to introduce the youth. He wants to bring the youth in the house to make आगे decisions. लाना एग्जैक्टली यू नो Yes, वो when the time comes, I don't know what happened to them. But then he did not trust the youth. Like you were saying, when the time was to make decisions, then he was asking all the elders, the बिल्कुल यू older. नो मैं तो मानती हूँ दैट यूथ को आगे लाना है आगे अगर हम लाएंगे फिर वो लोग आएंगे यू नो
है हाँ ना? जी, उनको एक हाँ जी। चांस देना चाहिए और देखना बड़े चाहिए। बड़े ही छोटों को लाते हैं ना, छोटे खुद तो ऊपर नहीं तो ऊपर नहीं आते ना। खुद ऐसे ही है, खुद ऐसे ही आते हैं जैसे आपने बोला कि वो जंग के बॉर्डर में जो है वो भी तो सारे यूथ ही है ना, लाइक सो फ्रॉम 30s to 40s until they fight at the border, and after that they are done. So then youth is done. So I think youth को हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। एग्जैक्टली हर जगह पे देखिए अभी हम विंटर ओलंपिक्स के बारे में बातें करेंगे और हाँ विंटर जी, ओलंपिक्स में सारे के सारे यूथ है और लाइक यस। यंग पीपल जो लड़कियों में दे आर इवन इन टीन्स लेस देन यस, 20। यहाँ तो जैसे ये रेस अभी जैसे हमारे जो बाइडेन है इतने ओल्ड होके भी वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इनको भी तो अगर वो इतने स्मार्ट है तो इनको ओलंपिक्स में भी जाना चाहिए, तो पता चले कि हमारे हमारे बूढ़े ओलंपिक्स भी कर लेते हैं। नहीं एक्चुअली जोक्स अपार्ट क्या है कि मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैं जो बाइडेन को मैंने भी वोट दिए थे। तो जी, जी। जब ये प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहा था तो देन 22 आई बिलीव 22 और 24 पीपल उसमें कई सारे यूथ थे। लेकिन हमारी पार्टी ने मुझे नहीं पता कैसे और जो बाइडेन एंड बर्नी सैंडर्स वही एक्सपीरियंस वाली बात आ गई, उन्होंने एक्सपीरियंस वाली एक्सपीरियंस। बातें आ जाता हाँ है। जी, तो हाँ मेरा जी। यही बोलना है कि यूथ जो है उनमें एनर्जी है, नए आइडियाज है, देन दे आर वेरी गुड इन सोशल मीडिया, इन नेटवर्किंग एंड देन यस, टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल वाकिफ है, एकदम लेटेस्ट जो है उनका दिल और दिमाग में एंड एक्सपर्ट इसमें इन टिप and टोज। they keep an eye on the Yeah, they are very latest vigilant, thing. exactly. Yes, they want to go into everything, they want to hear everything, and they want to talk about everything. But when it's the time for to really talk about, they don't get a chance. Like, आई नो। so, सो विंटर ओलंपिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो जी, जी, विंटर ओलंपिक्स एंड ईयर ऑफ द टाइगर। China is shining with the gold, silver, and bronze medals. Norway has got the most gold medals. China has made a superb and magnificent setup with ice for this Winter Olympics. चाइना में देखें इतना अच्छा उन्होंने बर्फ का सब कुछ बनाया, विंटर ओलंपिक्स के लायक बनाया, हाँ जी। दैट ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। So what is your comment on the Winter Olympics? Winter Olympics. They host all the countries. They did hosted all the countries. Like all the president from my country, prime minister was there, and on their. Exactly, मैंने देखा है उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So it's China. It's not my country. It's China who is hosting countries, and we should respect China for this. And, you see now they are showing like Norway is becoming a big face in Olympics because of China, not because of Norway. Then the host was China. So we should give credit to China for this beautiful event. So, and one more thing, that if I'm a dual national, if I'm a Pakistani American and I want to go play Olympics and I'm playing from America, but in my country, there is a concept, they say, oh, this guy is Pakistani and playing from America. So I think this shouldn't be. I think some countries think like that. I think they should promote things like that in their own countries too. They should, there should be events in every country, and every country should go participate, and then we can make good allies with countries like this. So, so I think it's a good step for all countries. And Right. China is always number one to make steps. So they always make good So, steps. yeah, so we are coming to our second part of the discussion about China. So, the tiger is known as the king of all beasts in China because it's the year of the tiger. That's why we are talking about cheetah, about the tiger. Gigi. The zodiac sign tiger is a symbol of strength, removing evils, and presenting braveness. Many Chinese kids wear hats or shoes with a tiger image or logo for good luck. China is a growing influence on other developing economies through trade, investment, and ideas. Following real GDP growth of
2.3% in 2020, China's economy is projected to grow more than 8.5% by 2022, largely driven by base effects. China and the World Bank Group have worked together for over 40 years. So, my question to you is tell us a little bit about the CPEC and how far do you see China going in the next 5 years? Sure. I will talk about the CPAC before I will say something about, China and this pandemic and Americans' relations with China. I think China was strong. Even we were saying that this pandemic was because of China. I think every country was saying that this coronavirus came from China. Even our ex-president, Mr. Trump, even said The it in a Wuhan meat market. Hanji. Even they said it, but they were still strong. They were still helping people, and they were still fighting for pandemic, and they are the one who cure cities from pandemic. They were the first ones who cure, and they were helping all the poor countries, and they're still helping all the poor countries by CPAC. You see CPAC in my country. I think they are helping. It started in 2013, and the CPAC was born in 2013, and they are helping Pakistan so much from the CPAC. We have so much, like, their infrastructure, or like, the Yeah, roads institute, are being built, then trade yeah, and tourism. and transportation, like they're helping for the transportation, because in our country the transportation is not so Commute. not so good. Like here we have trains, buses, and all that. We have like private system in Pakistan. Mhm. So from this help we can start a government is like starting everything on behalf of governments, not like private people, like I'm going there and making a buses, or I'm spending my own money. I think it's a good thing, and we are happy for it that Chinese people don't think like others. They still help people. Even you talk about them, like they still go out there and they help everybody. Even Americans get help from China, but we I still, know that, in America, there are so many Chinese restaurants that takeout se shuru karke yes, dine in, everything. and then They are very hardworking popular people. ho chuka hai, that And the unbelievable. smart people, hardworking people. Chinese people are very smart people. They are very hardworking people. They run the most businesses in America. They run the industries in America. They are everywhere. Wherever you go, you're gonna see China, man. पूरा वर्ल्ड मार्केट को एकदम कैप्चर करके रखा है चाइनीज. And They're very much blessed that China में जगह ज़्यादा है, and then they have so much of manpower, तो उन्होंने इस फायदे का पूरा इस्तेमाल किया, पूरा they have फायदा they लिया. have best industries. They have best industries from all over the world. Everybody's buying stuff from China. हाँ, क्योंकि अच्छा उनका क्वालिटी होता है. मैंने काफी Yes, कर चुकी हूँ, एंड देन कीमत बहुत कम होता है, तो देन अगर लोग अच्छा क्वालिटी कम कीमत में लोगों को मिले, तो क्यों नहीं भाई, लोग तो helping people, helping the world. The most important thing is helping the world. Me and you, we are Americans. We here in America. Maybe I can go buy a Gucci for $1,200, but there is somebody who can go buy a Gucci for $60. Made in China. He wants to wear Gucci too. It's not like exactly, he you wants to like. buy Gucci too. Hanji, Exactly, hanji. वो तो Yes, है, and then when you think about it, there is China, who's going to help you to look like in the way you want to uh, show yourself. So that's a good thing. China is good. And for the year of tiger, I think whoever's going to born after this year, after year, he's going to be a tiger, big tiger. आई नो. तब तक ये ओमिक्रॉन एंड देन कोविड का जो कमी सब वतनों को हुआ है. आई मीन दिस होल वर्ल्ड गॉट टर्न अपसाइड डाउन. इकोनॉमी इतनी लाइक डैमेज हो चुका है.
हमारा तो देखिए सबसे like दुनिया तो ये भी सोच रही थी कि I don't know what's gonna happen, which country is gonna be, या तो countries खत्म हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, or like there is nothing will on this world, but these people, like they made the cure, they help people, they made masks, free masks, free, they send free stuff to the people of the world, the कोविड whole world. टेस्टिंग या एंड देन COVID जो testing, शॉट्स the या funding, एग्जैक्टली the जो COVID funding, the free funding. It's not a loan or something. They give you the loan or something. They give you free funding, and nobody else did that. Only China helped. Even China helped America for this COVID. तो चाइना के साथ आपको क्या लगता है हमें दोस्ती करना चाहिए दोस्ती ना भी हैंडशेक करें, करना हमारी चाहिए हमारी मजबूरी भी है, हम नहीं भी करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई थिंक हमारी अपनी मजबूरी भी है कि चाइना, because all the Chinese, we have good immigrants here in the US, those people are Chinese. If they put them down, this is not good. We need good relationship with everybody. We have देखिए citizens from आई मीन अमेरिका के साथ चाइना का रिलेशनशिप एकदम अच्छा नहीं है मैं तो बोलूंगी बहुत ही बुरा है ठीक है और उसका एक वजह जो है वो है ताइवान हम्म तो ताइवान को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है ब्लेम गेम एंड लाइक लफ्ज़ों का जंग जिसको कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स तो शी जिनपिंग और जो बाइडेन जब ट्रम्प थे तब भी चला अभी बाइडेन हुआ है तब भी चल रहा है लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट इट्स सबसे वी शुड गो बियॉन्ड लाइक वी शुड पुल आवर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल और उसके लिए आई मीन हैंड शेकिंग इज वन ऑफ द No, this is the Olympic is big example for that. Every एग्जैक्टली country is over there. So if we are like, if we don't like them, obviously I'm not gonna go there. I'm not gonna be part of their anything. So if I'm there, that means I like China, I love China, and I support China. That's why they're there. Like America is there, Russia is there. Like those all big powers are together on one page. या और इतने सारे जो कोविड एंड ऑल दैट वेव्स आफ्टर वेव्स थर्ड वेव फोर्थ वेव फिफ्थ वेव कितने वेव्स लहर आता रहा लेकिन इसके बावजूद भी दो दो ओलंपिक्स हुआ और दोनों ही एशिया में आई मीन जो समर ओलंपिक्स वो भी जापान में और ये बीजिंग में हुई है चाइना में सो इट इज बहुत ही काबिल तारीफ दैट कैसे आई मीन आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो असावरीज मीटिंग शो फ्रॉम एशिया तो इसीलिए you have a very strong point and strong ground to talk about ये पूरा खेल और तरक्की और कामयाबी हाँ जी. these are the things that अभी थोड़ा सा हम रशिया के बारे में बात करते हैं देखिए मैं तो मेरा जो ओरिजिनल जो मेरे अब्बू अम्मी दे आर इंडियन तो अम्मी की तरफ से मैं कश्मीरी हूँ एंड देन अब्बू की तरफ से मैं इंडियन हूँ जी और जी. लेकिन अभी मैं अमेरिकी हूँ अमरीकी तो मेरा परवरिश मेरी अपब्रिंगिंग मेरा स्कूल कॉलेज मेरी जॉब मेरी रहन सहन मेरा खाना पीना उठना बैठना हंसना हंसाना सब कुछ इस वतन से जुड़ा हुआ है तो मैं दिल और दिमाग से पूरी तरह अमेरिकी हूँ लेकिन Nice. द वन थिंग जो मुझे कभी हजम नहीं हुई वो है वॉर मॉन्गरिंग बातों बातों में लोगों के साथ लड़ाई करना अपने आप को सुपर पावर बोलना और अभी मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस जी. USA and Russia have similar military strength and both are superpowers. Since the annexation of Crimea, USA has convinced Ukraine that it will support it by troops, arms, and ammunitions. Russia has warned USA about staying away from its affairs with Ukraine. USA is very aggressive and has sent over 40,000 plus troops already in the Ukraine border with Russia.
There is a war of words ongoing between Biden and Putin on Ukraine. Do you think that USA should stop spending, in fact, wasting money on wars? Because USA has the most COVID casualties and is bogged into almost $30 trillion of debts and deficits. So, what is a better solution for Russo-Ukrainian crisis and USA being in between them? I think the better solution is to let those leaders come on and sit on one table and talk about the people of the world. It's not about Ukraine, it's not about Russia, it's not about America, it's not about China, it's not about Pakistan or India. It's all about the people of the world. If they all leaders should come on one page and talk about this, I think they can solve it. Or if the Putin will stay there and show his power, or he goes to those marine tanks or goes to those, those big ships, or if they show that and try to show his power that I'm the world power, I think we will not going anywhere. And the Ukrainians, I think, like me and you, we have the same thing. Like your mom, you said your mom is from Kashmir, and Kashmir is a distributed part. Kashmiri should decide like they want to be part of India or part of Pakistan. I think this is the same thing with Ukraine. Ukraine doesn't want to be part of Russia. They are from they ask help from America. Like they signed their North Atlantic Trinity organization. They have signed that organization. So from that, but America is trying to help the people of Ukraine. America is not going to take over Ukraine. Nobody said America went to take over Afghanistan, or America went to take over Iraq, or America went to take over Iran, or America went to take over something. America is always there to help people. So I think we just need some good leaders. Those people like me, you from India, I'm from Pakistan. We are on one page and talking about this world's economy or this world's people. I think we should all think about the people of the world, like where they wants to stand and who is there to help them. So we need that leader, and we will call him the world power. America is world power, Russia is power, China is big power. No, I think Russia is number 3 now in the uh, military showroom. So so I don't know. I think the Ukrainian people should decide where they wants to be. And if Russia don't listen to them, and they should come to America, and America should help them because they call themselves मैंने the world सुना power. है that ये खबर में आया that about 200K 200,000 troops रशिया ने इकट्ठा किया है at the border and then और भी troops को भेज रहे हैं, ठीक है? और रशिया का जो मिलिट्री पावर है हमसे ज्यादा तगड़ा है, बड़ा है और मजबूत भी है। तो हम जो हालात से गुजर रहे हैं अभी, क्योंकि कोविड ने हमसे लगभग 1 मिलियन लोगों को छीन लिया। बहुत ही ये दुख की बात है दैट हमने इतने लोगों को गंवाए हैं फ्रॉम 2020 टिल नाउ। एंड देन हमारा खुद का हालत बहुत नाजुक है एज पर द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, स्टॉक मार्केट से शुरू करके एंड देन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास जॉब्स है उनके पास आवर्स हैव बीन काटल्ड एंड देन देखे थोड़ा सा लाइक स्कार्सिटी भी हो रहा है। स्कार्सिटी का मतलब है कि दैट जॉब है लेकिन पैसा सैलरी की कमी के वजह देर इज लैक ऑफ स्टाफिंग इशू। तो जी, रेस्टोरेंट से शुरू करके सभी जगह हॉस्पिटल्स से तक कितने सारे जगह हैं। तो ये सब कुछ में हमें ये मुझे फील हो रहा है दैट हमारे वतन को लाइक अगर हम सच में सुपर पावर बनना चाहते हैं,
रहना चाहते हैं तो पहले अपने आप को मजबूत करें, अपना घर को संभालें, क्योंकि अगर हमारा घर बिखर रहा है, हम दूसरे वतन पे जाके, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके किसी और को मदद करें, तो ये कैसी बात हुई यार? इसको नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। हम तो ऑलरेडी पावर है ना, आपने भी 3-4 बार बोला है, हम बहुत पावर है, हम वर्ल्ड पावर है। तो हम तो ऑलरेडी पावर है। तो अभी हमें तो सिर्फ चूज करना है कि हम हेल्प कैसे करें। लाइक हाँ, अभी आपने हेल्प बोला, कैसे करें? सो यही है कि आई थिंक बात सारी डिसीजन की होती है। अमेरिका इज पावर, अमेरिका हैव एवरीथिंग। अमेरिका अगर लड़ाई वहां पे करना चाहता तो कर सकता था। अमेरिका ने लड़ाई नहीं की, अमेरिका बस वहां से आ गया। और देखें, पाकिस्तान भी उनके साथ था डायलॉग्स में, और शायद उन्होंने डायलॉग्स की करके और वो चीज को खत्म कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी डायलॉग्स होने चाहिए। और हाँ, यूक्रेनियन डायलॉग्स होना यू, चाहिए, वही तो यूक्रेनियन डायलॉग्स बिल्कुल होना चाहिए। यूक्रेनियन लोगों के लिए होना चाहिए। लाइक दोज पीपल हु नीड्स हेल्प। ऑटोनॉमी जिसको कहते हाँ हैं, जी, राइट। उनके लिए होना चाहिए। बाकी अमेरिका इज पावर, ऑब्वियसली एवरी वर्ल्ड नीड्स अमेरिका। लोग तो चाहेंगे ना हमारी हेल्प अमेरिका करे। लाइक तो वो हेल्प तो कंट्रीज मांगेंगे ना। अमेरिका उससे बैकअप थोड़ी कर सकता है। अमेरिका इज पावर, अमेरिका किसी को ना बोलेगा तो अमेरिका तो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। तो ना नहीं बोलेगा। सिर्फ पुतिन से चाहिए कि इनको कोई डायलॉग्स का कोई तरीका बनाना चाहिए अच्छा सा। जैसे अभी देखें, पाकिस्तान से भी डायलॉग्स ये नहीं कर रहा बाइडेन। सो ये सारी खेल डायलॉग्स की होनी चाहिए, जंग की नहीं होनी चाहिए। अब मैं तो आई पर्सनली डोंट सपोर्ट वार टू। सो but they कोई are नहीं power, war को they have सपोर्ट करे, everything. लेकिन I'm like you said, the youth, youth know everything. Youth know what America has, youth know उनके what पास पूरा Russia has. रिकॉर्ड होता है, बहुत अप टू डेट रखते हैं अपने आप को यूथ। हाँ जी, तो उनके पास, रशिया के पास भी सब कुछ है, अमेरिका के पास भी सब कुछ है। अगर मैं और आप यहाँ पे बैठ के बोल दें कि आई वांट टू सी अमेरिका एंड रशिया फाइटिंग, लेट्स सी who's gonna win. Nobody's gonna win. ये What do you वीडियो think? गेम्स थोड़ा ही ना है। No, well, nobody's gonna win. America, Biden's gonna, finish everything by sitting here. Maybe Russia can finish the whole world because they already show the world that we can finish the world. They have those fireworks to, show what their powers are. So, उस चीज को खत्म करने के लिए, I think we should talk and resolve issues on for the people. लाइक लोग जो चाहते हैं हमें वो करना चाहिए। लाइक ये मेरे घर है, अगर इस पे कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे ही सुन के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कि लाइक बाहर से जो दो आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए। लाइक अमेरिका कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट शुड हैपन इन यूक्रेन, और रशिया कैन नॉट डिसाइड व्हाट्स गोना हैपन इन यूक्रेन। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मेरा वही सवाल था दैट जहाँ की हमारे घर में इतना प्रॉब्लम्स है, होमलैंड सिक्योरिटी में, देखिए गन वायलेंस कहीं से कम हो हाँ ही जी, नहीं रहा है, हाँ जी, खत्म हो ही नहीं रहा है। देन कलर्ड पीपल्स के साथ, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हमारी जो वाइट सुप्रीमेसिज्म जिसको कहते हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट का बहुत चलता रहता है। कनाडा के साथ पहली बार हमारी प्रॉब्लम हुई, देन मेक्सिको के साथ हमारा बनता नहीं, देन हाँ जी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो तमाम है उनके साथ भी हमारा कभी उत्ते कभी थल्ले, अप्स एंड डाउन्स चलता ही हाँ जी। रहता है। नहीं, अमेरिका और मेक्सिको का तो सिर्फ ये इशू है ना, इनकी जो बॉर्डर्स पेट्रोलिंग है, उसी का इशू है। लाइक इलीगल बहुत एक्टिविटी, सारे इश्यूज है, एक तो है वो इलीगल ड्रग्स ट्रेडिंग, एंड yeah, देन illegal हाँ, activities, all इलीगल the एक्टिविटीज, trading एंड and देन all the जो migration and all that. मिग्रेशन का जो मसला, हाँ, माइग्रेशन, हमें उधर से इधर आना, इधर से उधर जाना, उनका यही जॉब्स मसला है। की, हाँ। उनका ये मसला नहीं है कि ये जगह मेरी है, आई वांट फाइट फॉर दिस, हम इसके लिए लोगों को मार दें और किडनैपिंग कर लें और ये कर लें। लाइक जो हमारे कंट्रीज में हो रहा है बॉर्डर्स के ऊपर, लाइक कश्मीर ही देख लें आप, उधर यही कुछ चल रहा है ना, और बिल्कुल क्या हो रहा बहुत है। देयर इज बुरा हो नोबडी। रहा है। हाँ जी, लाइक मैं देयर इज बता नहीं नोबडी, सकती, देयर दैट इज नोबडी टू टॉक अबाउट दोस पीपल, इट्स हु। रियली हार्ट ब्रेकिंग, इट्स हाँ रियली जी, जेन्युइनली हार्ट ब्रेकिंग। हाँ जी। इसका लाइक मैं क्या बोलूं, आई मीन जब लाइक हम देखें ना, अभी यूनाइटेड नेशन भी फैसला नहीं ले पा रहा। इट्स लाइक दैट बैड कि यूनाइटेड नेशन को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह फैसला लूं। और वो इसीलिए फैसला नहीं ले पा रहा क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लीडर्स नहीं है कि वो जो खुद एक होकर कुछ फैसला करें और उस फैसले को लोगों तक पहुंचाएं। लाइक जब ये खुद
एक टेबल पे बैठकर एक फैसला करेंगे तो अवाम ऑब्वियसली अवाम उस चीज के बारे में सोचेगी कि हमारे सब लीडर बैठे हैं और ये सब हमारे लीडर हैं और इन्होंने ये फैसला किया है और लोगों के लिए फैसला किया है, तो उस फैसले को फिर लोग मानेंगे भी। अगर मतलब हमारा एक प्रॉब्लम है। मोदी साहब वहां बैठ के फैसला करेंगे और इमरान खान साहब वहां पे बैठ के फैसला करेंगे, आई नो, तो वो एक बार फिर भी वो कुछ लाइक एक दूसरे के आमने सामने रूबरू बैठ के इन्होंने बातें किया ही नहीं। ये गुनाह नहीं है। हमारे लोग तो कहते हैं ओ वो उससे क्यों मिला, वो तो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो उससे क्यों मिला, वो इससे क्यों मिला। नहीं, रिलीजन, इसमें तो रिलीजन देखिए इज मजहब या से दूर की रिलीजन, बात होती है, रिलीजन मजहब इज को नॉट ये कम ऑन बात। द हाँ जी, टेबल। इसमें तो हम मुद्दे पे बात करते हैं, हाँ जैसे कि जी, हाँ जी, आपका मजहब मेरा मजहब कुछ और है, देन आपका वतन मेरा वतन कुछ और है, हाँ लेकिन जी, फिर हाँ भी जी, हम कितने अच्छे प्रोडक्टिव बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से आपस में हमारी समझौता भी अच्छी बन रही है, दोस्ती बन रही है। जब हाँ जी, समझौता होगी बिल्कुल तभी ना दोस्ती होगी। तो बिल्कुल ऐसे। देखिए हमारी जो इंडिया की मैं बात बोलूं, एक जो प्रॉब्लम है, देखिए इंडिया इज वेरी डिवाइडेड, ठीक है। हाँ जी, हमारा मुद्दा तो आज रशिया और यूएसए है, लेकिन आपने सवाल किया, मैं उसका थोड़ा सा बातें करूं। सो जो सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, सेक्युलर इंडिया इज वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेलकमिंग, वेरी समझदार, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मेन जो है सभी को अपनाना, हाँ ठीक जी, है। लेकिन कम्युनल इंडिया जो है दूसरे तरह का, सो दे आर इन पावर राइट नाउ। तो इसीलिए उनका जो है दे आर वेरी स्टॉन्च। एंड देन सबसे बड़ी बात है, देखिए एक विशनरी होने के लिए एजुकेशन इज मस्ट। यस, इंडिया का जो वजीर आजम अभी है, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं है। जी तो जी। ये सबसे ज्यादा लाइक इंडिया को धक्का पहुंचा, इन माय अंडरस्टैंडिंग। कोई हाँ भी जी, वतन का जो और वजीर आजम है, तो ऊपर से उसने सेकंड टर्म भी ले लिया उन्होंने। सेकेंड टर्म भी उन्होंने ले लिया। तो हाँ जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द बॉर्डर्स एंड फॉर द नेबर्स एंड खासकर फॉर कश्मीर, क्योंकि एक विजन तभी डेवलप होता है जब आप भाई पढ़े, जिस चीज को समझे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप समझदार ना हो, अगर आप अपने जिद में लाइक नहीं अड़े कुछ हो, लोग, तो कुछ अवाम का भी कसूर होता है ना, लाइक पीपल, कुछ उनका भी कसूर होता है कि वो अपने उनके साथ फेयर नहीं होते अपने लीडर्स के साथ, लाइक वो होना चाहिए फेयर भी, लाइक आप खुद ही कहते हो कि वो फिर आप अपनी कंट्री के साथ फेयर नहीं होते व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस। वो ऐसे कुछ है ना, आपकी मूवमेंट्स हैं इंडिया में भी, हमारे कंट्रीज में भी ऐसी कुछ मूवमेंट्स हैं, उसमें जब आप अपने लीडर को डाउन करते हो तो देन यू पुटिंग योर ओन कंट्री डाउन। तो ये बस अवाम के फैसले होते हैं। आई थिंक अवाम जब सही आराम का, फैसले, या एग्जैक्टली, तो अवाम सही इसीलिए फैसला करेगी अवाम इज तो सब कुछ सफरिंग, सही। दैट इज व्हाट इट इज, जो लोग मक्खन अगर कोई खाए तो देन मक्खन ये निकालता देखें, है। एक कॉन्सेप्ट पैदा किया जाता है हिंदू मुसलमान की जंग का। अब देखा जाए तो मुसलमान ज्यादा तो उधर इंडिया में है, पाकिस्तान में हाँ, कम है, बिल्कुल, इंडिया आबादी में बहुत ज्यादा है, है मुसलमान। बिल्कुल। एक्चुअली तो पूरी दुनिया में अनऑफिशियली अनऑफिशियली लाइक इस्लाम इज नंबर वन मेरे ख्याल से, ऑन रिकॉर्ड एक्चुअली क्रिश्चियनिटी इज, लेकिन मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, नहीं, अनऑफिशियली। इस्लाम को आप ऐसे देख लो कि इस्लाम इस्लाम वाज द लास्ट रिलीजन। सो लेकिन एक्सेप्ट ही करना है ना, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें भी एक्सेप्ट करो कि हम, हमारा भी रिलीजन है, हम भी मानते हैं किसी को, किसी का प्रे करते हैं किसी को, सो ये सिर्फ सिर्फ वो मानने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मान जाओ कि आपका रिलीजन, मैं मान जाऊं जी आपका रिलीजन है और आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे मर्जी प्रे करो, जो मर्जी करो, मेरा रिलीजन है उसको देखिए तो। कमिंग बैक टू द यूएसए एंड रशिया, देखिए यूएसए में मेजोरिटी क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। रशिया में भी ऑलमोस्ट सेम है। तो लाइक मिलिट्री पावर से शुरू करके, मजहब से शुरू करके, कल्चर से शुरू करके, क्विजिन से शुरू करके, अमेरिका के साथ रशिया का बहुत सारे सिमिलरिटीज, लाइक मील है, ठीक है, हाँ जी, मिलता बैठ जुलता है। सकते हैं, ये बैठ हाँ, सकते हैं देन टेबल पे। फ्लैग का जो ट्राई कलर,
देखिए ना, आज हम कहीं कहीं से फ्लैग कलर पहन के आए हैं। अमेरिकन बने हुए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ब्लू है, देन रेड है, एंड देन मेरा जो पर्ल का जो नेकलेस है वो वाइट है। तो जी जी जी। रशिया एंड अमेरिका का जो फ्लैग कलर है वही हूबहू सेम ट्राई कलर्स है। तो हाँ जी। इतना मिलता जुलता है, लाइक फिर भी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का लाइक दोस्त नहीं बन यही पा रहे। यही चीज हमें सिर्फ अवाम के अंदर अवेयरनेस करनी है कि हम सब जो है ना उनको एक पेज पे आके काम करना चाहिए, फॉर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, फॉर द पीपल हु इज डाइंग आउटसाइड, लाइक हु हैव नथिंग टू ईट, हु हैव नथिंग टू वेयर, फॉर दोज पीपल। मैं तो अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, आई कैन टॉक द वे आई वांट टू टॉक। लेकिन मुझे तो बोलना चाहिए कि कोई सुनेगा तो वो ये बोले कि यार वी शुड बी लाइक दिस, वी शुड डू लाइक दिस, एंड वी शुड अचीव समथिंग लाइक तो फिर हम कुछ अचीव बिल्कुल, आप करेंगे। एक रोल मॉडल बन के रह जाएंगी, हाँ आपको जी। लोग फॉलो करेंगे, आपका फैंस एंड फॉलोअर्स होगा, आप एक तो पब्लिक फिगर बन जाएंगे। हाँ जी, पब्लिक के लिए बात होगी तो फिर आप आई थिंक यू आर रिकॉग्नाइज्ड। तो पब्लिक के लिए ही बात करनी चाहिए, लाइक पब्लिक के अच्छे के लिए बात करनी चाहिए, पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए बात करनी चाहिए। तो फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर सॉल्व खुद ही हो जाती है प्रॉब्लम। व्हेन यू ब्रिंग अप समथिंग, वो खुद ही सॉल्व हो जाती है। फिर लोग उस चीज के बारे में खुद सोचना शुरू कर देते हैं कि यार वाकई यार इट शुड बी लाइक दिस, वी आर रॉन्ग, वी शुडंट डू दिस, वी शुड डू दिस। सो आई थिंक ये अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए थोड़ी सी। और इसके लिए तो आप पहले कह रहे थे यूथ, बच्चा है, यूथ ही चाहिए हमको, यूथ आएगा सामने तो ये सब कुछ होगा। राइट। नहीं, देखिए, उम्र में तो बच्चा है यूथ, लेकिन कच्चा नहीं है। हाँ कच्चा जी भी हाँ नहीं है, बच्चा भी नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छा ही अच्छा है ना? जी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ही अच्छा है, यूथ ही अच्छा है। अच्छे ही अच्छे हैं। जी जी। क्योंकि यूथ में एक कैरिस्मा होता है, एक फ्रेशनेस, चेहरे में भी एक फ्रेशनेस, आइडियाज में भी एक फ्रेशनेस। वही हाँ जी। सेम ओल्ड सड़ा हुआ, लाइक थियरी एंड वार मॉन्गरिंग। लाइक ये वार देखे ना, मॉन्गर। ये देखे ना, ये चीज हमारे अमेरिका में मिलती है जहाँ पे हम अब बैठे हुए हैं। लाइक वी गो रिप्रेजेंट अमेरिका, वी गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी प्राउडली रिप्रेजेंट अमेरिका। इन दोज कंट्रीज दे डोंट डू दैट। Like I'm a dual national. I go still out there and represent my country. I represent America. I live here, and I'm living here from so long time. But when I go out, I'm gonna go to Chinese. Even you take me to Chinese Olympics, I'm gonna go. I'm gonna put my American flag and I'm gonna run something from America. I'm gonna participate from this country. You know. So ये भी होना चाहिए, लाइक चाइनीज हमारे इधर के, अभी आप ओलंपिक्स दिखा लेना, कितने चाइनीज गए हुए हैं जो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक ओ बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक्स में इतने सारे, लाइक खिलाड़ी जो गए हैं, एंड देन ट्रूप्स में भी तो है ना, हाँ, ट्रूप्स वो में भी डुअल नेशनल है। आप देखें उनके लाइक चेहरे, डुअल उनके नेशनल है। उनके हाँ, चेहरे बिल्कुल देखें। बिल्कुल, उनका जो फीचर्स है वो बिल्कुल एशियन फीचर्स होते हैं, एंड देन हाँ जी कितने सारे हैं, वो अमेरिका को इतना जबरदस्त प्यार करते हैं, उनमें इतने पेट्रियोटिज्म है, भरपूर पेट्रियोटिज्म हाँ है। जी वो लोग छाती में हाथ डाल के एकदम लाइक आंखें बंद करके वो अमेरिका नेशनल एंथम को गाते हैं, फ्लैग लपेट लेते हाँ हैं। जी हाँ जी। आई मीन दे आर फाइटिंग आल्सो There फॉर is देयर कंट्री। nothing wrong with it. There is nothing wrong with it. बिल्कुल। Like some people have that mindset, they think, oh, what is he doing? He doesn't look like American. He looks Muslim. Why he's लेकिन doing? Why अमेरिका is इज अ कंट्री व्हिच इज बिल्ट yes, बाय फॉरेनर्स, yes. एग्जैक्टली। Why he's doing this? Why he have American flag on him? What is that? So ये mentality थोड़ी सी खत्म करनी पड़ेगी। इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं आई नो, हम लोगों कोशिश के। तो बिल्कुल करते रहेंगे। तो अभी टाइम का जो होता है, जी तो करता है पूरी दिन बैठ के आपके साथ बात करूं, लेकिन क्या भी करूं, वक्त के एक जो पाबंदी होती है, फिजा के तरह भागी जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो आप हमें थोड़ा सा अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बताइए। और क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं आपसे अमन के बारे में, पीस के बारे में सुनना चाहती हूँ, पीस एंड हार्मोनी। क्योंकि अब जहाँ पीस हो उधर हार्मोनी होना चाहिए, और पीस और हार्मोनी एक साथ अगर हो तो प्रॉस्पेरिटी। हमें तो अभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत जरूरी हो गए हैं। तो प्लीज अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में सलाह दीजिए। हाँ जी। For peace, I think we should all be on one page. No race, no religion. We shouldn't see all that, and we should be on one page without all that.
And then I think you can recognize my religion after you sit with me and you see, oh, this guy have this religion or this religion. Then religion can come after that. You know? First of all, it's our, we should be on one page to bring peace in this whole world. All of us, like your race, I shouldn't worried about like where you were from. I should see like how you coming from. So सिर्फ ये होना चाहिए कि आप कैसे चीजों को देखते हैं और कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं और क्या क्या सोच रखते हैं. सो वो चीजें होने चाहिए आई थिंक. तो यही चीज है कि इसलिए हमें सबको लाइक अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, उन सबको मिलजुल के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी चाहिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. ये नहीं है कि मैं मेरे करैक्टर पे बात करूं या मैं आपके करैक्टर पे बात करूं. हमें आई थिंक वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स पे बात करनी चाहिए, लाइक इश्यूज पे बात करनी चाहिए, करंट अफेयर्स पे बात करनी चाहिए. ये नहीं कि बस मेरे और मैं आप पे बात करूं, आप मुझ पे बात करो. ऐसे नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक व्हेन जब हम सब मिलजुल के ये सारी बातें करेंगे तो फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे और फिर हम हर चीज को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं. अभी हमें रिलीजन भी कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं इन दिस वर्ल्ड. आई थिंक देयर इज नो रिलीजन. कोई किसी का आप अगर मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, आई एम नॉट फुली मुस्लिम, आई एम नॉट फुली प्रैक्टिस कोई भी रिलीजन फुली प्रैक्टिस कोई भी नजर नहीं आता है. वो वही नजर आता है कि वो जो एक प्रीस्ट होगा या मस्जिद का इमाम होगा या आपका मंदिर का जो भगवान होगा वो जो होता है पंडित. हमारे भी राइट पंडित होता है होते हैं, यू नो पंडित जो होते हैं. लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो सारे उस तरह वो नहीं होते. वो आपकी प्रैक्टिस से नजर आता है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छा बन के रहेंगे तो आपका उसमें रिलीजन भी नजर आएगा, आपकी उसमें रेस भी नजर आएगी, आपका उसमें सब कुछ नजर आएगा. तो ये है कि हमें सबको मिलजुल के, वो किसी भी कंट्री से हो, वो कहीं से भी हो, वो हम सब एक हैं. हम सब एक जैसे हैं. हम सब के दो आंखें हैं, दो कान है, सब सब एक जैसे. खून So, का रंग लाल है सभी की. खून का रंग सबका लाल सबका है. लाल है, वो तो है. आई मीन बिल्कुल. इसमें मजहब या तो कौन से वतन से आप हो, अब लड़का हो या लड़की हो, आई मीन कुछ भी इसमें मायने नहीं रखता हाँ एक्चुअली. जी, हाँ. अगर आपको तो वो तो फिर वो दूसरी बात होती है ना, कुछ कंकर आपको करना है कुछ तो वो स्टोरीज और हैं वो बातें खत्म हो चुकी. कांकर्स हो चुका है सब कुछ. सब ने सब कुछ कांकर कर लिया है. सो अब लोग रह गए हैं. तो उन लोग जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और वो अभी इतना टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है. अभी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इस दुनिया के इस कोने में क्या हो रहा है या उस कोने में क्या हो रहा है. तो अब यही है कि उनके लिए बस अच्छा सोचें और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बैठ के बस. कि किसी भी चीज को बैठ के बस क्रिटिसाइज करते रहें कि ऐसे इधर क्यों ये हो रहा है, इधर वो क्यों हो रहा है, इधर ऐसे होना चाहिए, इधर ऐसे होना चाहिए. ये चीजें नहीं होनी दैट्स अ पार्ट ऑफ द गॉसिप. चाहिए. उसमें मसालेदार होता है ना, मसाला ही मसाला. मसले ही मसले. इधर सिर्फ मसले हैं, सॉल्व करने वाला आइडिया नहीं है. वो कोई नहीं देता. बस यही लोग आई नो. बयान करते हैं इसमें क्या मसले प्रॉब्लम. हल करना चाहिए. और मैं बिल्कुल एक बार और बोलूंगी दैट आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग द यूथ लीडर. और आप बहुत ही होनहार हो. I'm not leader. I'm trying to be a representative for the youth. Be a youth because हमारे अमेरिका में भी youth नजर नहीं आती इतनी. आप पॉलिटिक्स में चले जो मैं बड़े बैठे होते हैं बैठे या. होते हैं बस दूरी बेचारे बैठे होते हैं. बिल्कुल हमारे सामने नहीं जो आते. यंग जनरेशंस जो है, जो यूथ है, आई मीन बिल्कुल उनको आगे लाना है. यूथ तभी आगे आ सकते हैं. हाँ जी. और खुद आना चाहिए सबको. ये नहीं है कि मैं अब एक पार्टी से हूँ और मैं एक लीडर हूँ और देर I'm a member of something. मुझे ये मैं ही आ सकता हूँ. हाँ, सबको आना चाहिए, बात करनी और चाहिए. यूथ पे भरोसा करके उन पे थोड़ा सा जिम्मेदारी देना चाहिए और देखना चाहिए भाई कैसे कर रहा हाँ है जी, बंदा. हाँ जी, हाँ जी, यू हाँ नो जी. बिल्कुल ऐसे. तो आई एम प्रीटी श्योर दैट जो भी यूथ लीडर्स होंगे, दे विल डू अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज यूथ बहुत होनहार होते हैं, अप टू डेट होते हैं, भरपूर एनर्जी होता है, बहुत विजिलेंट होते हैं. और दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी. बिल्कुल ऐसे ही.
Yeah, they know like most technology. They understand most. Like even सोशल like मीडिया से लेके कहाँ कहाँ लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई मीन जो भी बोले, हमारे व्हाट्सएप, आप देखें दे ना, आर अब वही हमारे यू नो हमारे हमारे देखें कोई भी पीएचडी हो, लाइक कोई एल्डर हो, तो उसको आप आईफोन पकड़ा दें, इफ ही नेवर यूज्ड इट ही इज गोना टेक सो मच टाइम टू यूज इट। अगर वही चीज आप एक बच्चे को पकड़ा देंगे तो ही इज गोना प्ले मोर विद इट, लाइक वो उससे ज्यादा खेलेगा, उसके अंदर ज्यादा चला जाएगा, उसको ज्यादा वो करेगा। लेकिन वो जो बड़ा बंदा होगा वो सोचना शुरू कर देगा कि व्हाट शुड आई डू, व्हिच लाइक व्हाट आई एम गोना, बच्चा होगा तो ही इज गोना कौन रिएक्ट सा राइट अवे। थीम, कौन सा क्या करूँ, करूँ या ना करूँ। हाँ, करूँ या ना करूँ। एंड देन तो जब टाइम टाइम गुजर जाता है तो देन ओ दिस शुड, तो डिसीजन एनर्जी की लेने, कमी हो जाती है, एंड देन चलो रहने देते हैं, दे मेक गलती लेट भी देख लेट लेते हैं। दे मेक लेट डिसीजंस। सही, एंड जो यूथ होते हैं एकदम फटाक से आई मीन व्हेन फटाक से वो डिसीजन ले हाँ लेते हैं। एकदम सा तो कभी वो इंस्टेंट डिसीजन अच्छा भी होता है, कभी वो डिसीजन नहीं भी अच्छा होता, लेकिन डिसीजन तो होता है ना, डिसीजन डिसीजन तो तो ले होता लेते है, कभी कभी थोड़ा सा लाइक एग्रेसिवनेस होता है, ये मैं मानती हूँ, हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। एकदम कुछ मत करने से बेहतर तो होता है ना कुछ भाई, करो, कुछ करे हाँ जी, कुछ करना चाहिए। जी जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, और आपका इतना लाइक वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं, आपने मुझसे टाइम लिया हुआ था, सो आई वाज फ्री। आज जुमा भी इट था, वाज सो इंडीड माय ग्रेट हम प्लेजर। जुमा प्रेयर पढ़ के आए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम होता है उसमें, आप फ्री होते हो इस टाइम, सो आई हैव नो इश्यूज। थैंक यू सो मच, आपके आपने मुझे अपने शो में लिया, मुझे बिल्कुल, इतना। बिल्कुल, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आते रहें, और आप हमारे स्टार स्पीकर हो, तो देन आई विल अगेन सी यू नेक्स्ट मंथ। सो श्योर। हम नए मुद्दे पे बातें करेंगे, तो नए-नए बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे टेबल पे, तो एक-एक मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। यस। जितना हमसे हो सके हम बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, एंड देन बातों से बात और भी अच्छा हो जाता है। सो हाँ हम जी, बातों पे यकीन रखते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल डायलॉग्स पे यकीन होना चाहिए। डायलॉग्स हाँ जी, वो ये सिर्फ उस हम पे। वन टू वन बेसिस में बात करते हैं ज्यादा हाँ दौर जी, से, हाँ जी, लाइक बिल्कुल। बाकी जूम पे आप देखेंगे दैट बहुत सारे स्क्रीन्स, बहुत सारे मुद्दा, बहुत सारे लोग, तो हम एक एक मुद्दे को हाईलाइट करना चाहते हैं, और वन टू वन बेसिस में हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसमें मैं तो यकीन रखती हूँ कि इट्स गोइंग टू रियली वर्क। और हमारी मीटिंग शो अभी हमने जुलाई 2021 से शुरू किया, तो जी जी। अभी 7 मंथ्स हो चुका है, तो देन 7 मंथ्स में हम गिने चुने शोज किए हैं, लेकिन दिस इज द 28th मीटिंग, तो नाइस। उम्मीद रखते हैं कि दैट 50th नहीं एपिसोड माशाल्लाह, आप जल्द बहुत हो बहुत जाए। अच्छा काम कर रही हैं, और आगे भी आपको ऐसे काम करने चाहिए। आप माशाल्लाह बहुत कम्युनिटी के लिए कर रही हैं ना, लोगों के लिए कर रही हैं, और इस दुनिया के लिए कर रही हैं, पूरी दुनिया के लिए। सो ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, और आपके साथ एक बात तो मुझे बहुत सहमत है, देखिए अपने अपने हिसाब से हम सब लोग अपने जिंदगी में सेटल्ड है, ठीक है, जी जी लेकिन जी। इसके बावजूद भी हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं, तो हाँ जी। दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग स्टेप दैट नहीं ये तब होता है, ये भी देखें, ये तब होगा कि जब आप लोगों में बाहर निकलोगे। लाइक लोगों में ना निकलो, अपनी फैमिली में निकलो, लाइक गो टू योर नेक्स्ट हाउस, लाइक आपके जो हमसाया है उसके पास जाओ, उससे पूछो हाउ आर यू, आप कैसे हो, कोई प्रॉब्लम है। तो आप जब लोगों में बाहर निकलते हो तो फिर आपको आई थिंक आप उस चीज में आते हो, और आप फिर सोचते हो, और फिर आप उस चीज को करने की भी कोशिश करते हो। अगर जब आप अपनी लाइफ में चले जाते हो तो आई थिंक यू डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, और आपको फिर किसी चीज की फिक्र नहीं होती, फिर आपको अपनी जॉब की फिक्र होती है, अपने पैसे और अपने माल और अपने घर और अपनी बार की फिक्र होती है। सो आई थिंक आपके जो नेक्स्ट डोर है या उनसे आप हेलो हाय आपको करनी चाहिए, आपको उसका पता लगेगा कि यार वो किस प्रॉब्लम में है, अगर आप आई उसकी ऑलवेज डू, प्रॉब्लम। जब मैं टहलने के लिए निकलती हूँ, अभी तो वेदर जो है नहीं आप तो मुझे बहुत करती है ना, पसंद है, मैं कह रहा हूँ कि लोग नहीं सभी को करते, लाइक करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सबको करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो रिलेशंस होंगे वो अच्छे होंगे हमारे। और भी जो अब मजबूत हो जाएगा, हमारे जो बिल्कुल। देखे ना, अब एक लोकल लेवल पे घर को छोड़ के अगर हम कंट्रीज के जो हमारे हमसाए होते हैं, जैसे हमारा बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका कनाडा हमसाया है, पाकिस्तान इंडिया हमसाया है, जैसे कंट्रीज हमसाए हैं, इनको आपस में
लोगों के लिए जो है वो करना चाहिए कि लोगों की बेहतर जिंदगी जो है उसके लिए सोचना चाहिए कि इनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। लाइक यू नो ये कि हम क्या करेंगे तो इनकी जिंदगी बेहतर होगी। हमें किससे मिलना चाहिए, हमें किसके साथ कोलिजन बनाने चाहिए, हमें किसको अपना एलाई बनाना चाहिए, अब कौन अच्छा है उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, जो नहीं अच्छा तो हमें किसको कह के इससे भी बात करनी चाहिए। जो आपसे बात नहीं कर रहा आप किसी और को इन्वॉल्व करके उससे बात करें और फिर आई थिंक वी कैन सॉल्व ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम। देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम्स आई थिंक। ये छोटा सा वर्ल्ड है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, अब तो आपकी बात यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए आई थिंक इट टेक्स ओनली सेकंड्स, सो इट्स मिनटों नॉट। में, सेकंड्स में हो जाता है। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सो आई मच। विल अगेन सी यू वेरी सून और ओके, थैंक यू। आपको मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। ऐसे ही आप रहिए, यू नो, आई मीन विद ऑल द And सक्सेस at the आइडियाज। at the end, from for my viewers, I apologize if you guys if I said something that hurts your feelings or something. I दैट्स really ओके। okay. स्पॉन्टेनियस था एंड देन यू नो वी, हम दिल से बात करते हैं, दिल की बातें करते हैं, तो दिल से जब कुछ निकलता है, यू नो, वो बहुत जेन्युइन होता है जी एंड जी जी। पीपल कैन ट्रस्ट अस। ओके, चलो, फिर अल्लाह हाफिज। Allah, थैंक यू सो thank you so मच। much. यस। Take care. Bye bye.